Hello everyone, welcome to EduSure, where we are not just teaching you microeconomics, we are making sure that it sticks. ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये एक जर्नी है. So with that, let me introduce myself. My name is Samkith Sir, and I am a co-founder and a faculty at EduSure. I'm a master's in economics from ISI. So today we are going to talk about a very, very special course, and that is Introductory Microeconomics. Okay. Introductory Microeconomics is a course that EduSure is currently offering for absolutely free for all the Delhi University SEM 1 students. Now, this is a subject or a course that is important for not only economics honors, but also for economics minor. So any student in any college having economics as a major or a minor, this course is for you. So firstly, congratulations on the starting of your economics journey. And let me tell you, this subject is like the foundation of every economics course out there. Okay. If you can nail microeconomics, you'll be all set for all the big stuff. Okay. And trust me that this isn't just your semester examinations. ये हर जगह काम आएगा. Whether you're an economics major or a minor, as I said. The entire course is available, as I said, for absolutely free. So there are two ways to avail the course. Number one, each and every week we shall be putting up 3 videos on our YouTube channel. What is the YouTube channel? EduSure School. Okay, so open up your browser, go to EduSure School and subscribe it. You'll get 3 videos every week on introductory microeconomics, and the entire course material shall be finished in the next 1.5 months. Okay, that's one way to get the entire course for absolutely free. The other method to get the course for free is to enroll in our course. The enrollment fees is 0. Okay, so enroll in our course, get a student portal access. Okay, get a student portal access with a user ID and a password. You will get a user ID and a password and access the course. Okay, so on that you not only get the videos of concepts, so concept videos जो आपको मिलेगा YouTube पे वो तो मिलेगा ही, उसके अलावा you get PDF notes, उसके अलावा यू ऑल्सो गेट द पास्ट ईयर क्वेश्चन सोल्यूशंस और द PYQs. तो ये सब कुछ आपको स्टूडेंट पोर्टल पे मिलेगा. ऑन यूट्यूब यू विल गेट द कॉन्सेप्ट वीडियोज. ओके, सो वंस यू एनरोल यू गेट एक्सेस टू ऑल ऑफ दिस. सो सबसे पहले यूट्यूब का तरीका आपको कैसे एक्सेस करना है वो मैं दिखाता हूं. लेट मी ओपन इट अप फॉर यू इन ऑर्डर टू शो इट. आपको यूट्यूब पे जाना है, एड्यूश्योर को करना है टाइप, एड्यूश्योर स्कूल में जाना है और सब्सक्राइब पे क्लिक करना है. देयर विल बी अ प्लेलिस्ट दैट विल बी मेड फॉर इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, वेयर ऑल द वीडियोज विल बी पोस्टेड. ठीक है, दैट्स वन ऑफ द वेज. द अदर वे टू गेट एक्सेस टू इट इज बाय एनरोलिंग. अब एनरोल कैसे करेंगे आप? यू विल गो ऑन टू edushore.in, just open it up. A page, a pop-up like this will open up. Go into register now. रजिस्टर नाउ में एक फॉर्म आपके लिए ओपन अप हो जाएगा. इन द फॉर्म यू फिल अप योर नेम, ईमेल, मोबाइल, choose your university, Delhi University, and submit. All the students selecting Delhi University will be automatically given an user ID and a password. Okay, the user ID and the password will go on your WhatsApp number. So please be careful in entering the mobile number properly. अगर गलत enter हो गया तो आपको नहीं मिलेगा access. Okay, so once you do that, you will be getting a user ID and a password which you will open up the student portal and access. So student portal को कैसे open करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ. You, the link of the student portal will be given to you. You click on the link. Okay, अभी मेरा लॉग्ड इन है. लॉग आउट करके यूजर आईडी पासवर्ड आपने दिया, लॉग इन किए, जो कोर्स का एक्सेस है आपके पास में वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे. सो आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स. द कोर्स ओपन्स अप. ये पूरा कोर्स आपको ऐसे मिल जाएगा. ओके, सो इफ यू गो इनटू से द यूनिट 1, अभी मैं आपके सिलेबस के बारे में भी बात अभी करूंगा. सो एज यू कैन सी ऑल द नोट्स, थ्योरी नोट्स एंड क्वेश्चन, ये सारे आपके PDFs हैं जो इंपॉर्टेंट है. माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, जो भी वीडियोस यहाँ पर हैं वो हैं. फिर आपके DU सेमेस्टर के पास्ट ईयर क्वेश्चंस सॉल्व्ड. ओके, ये पूरा मटेरियल का एक्सेस
आपको फ्री में मिलता है, यू जस्ट हैव टू फिल अप द फॉर्म जो यहां पर है। ओके, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया हाउ टू सब्सक्राइब एंड हाउ टू एनरोल इन द कोर्स। अब सिलेबस के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ द कोर्स। सो सिलेबस, ये रहा सिलेबस। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ द कोर्स फॉर इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो एवरी ईयर बीए इकोनॉमिक्स का मीटिंग होता है। ये मीटिंग हुआ था 15th May 2024, द मीटिंग was held and this was the syllabus that was decided. Now majorly if you see, the main reading that you have is this one, Mankiw Principles of Microeconomics 8th edition. Okay, that is what we are following in all the notes and the videos that are already prepared for your advantage. ओके, तो अब एक एक यूनिट के बारे में अगर बात करें तो लेट्स टेक अ लुक एट द सिलेबस अच्छे से। यूनिट 1 इज ऑल अबाउट द बेसिक्स। सो यूनिट 1 में अगर नाम आप देखेंगे, इट्स इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ्स, राइट। सो एवर वंडर्ड व्हाई लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस? क्योंकि हर चीज का एक कॉस्ट है, राइट। सो हियर वील कवर द टॉपिक्स फ्रॉम द मैनक्यूज 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, thinking like an economist and the gains from trade. Okay, you'll start thinking like an economist और सही decisions लेना सीख जाओगे आप। Okay, so ये हमें यूनिट 1 सिखाता है। That's unit 1. Unit 2, how the market works. So unit 2 is where the things get a lot more fun. Markets, supply demand और एकदम धमाका है ये वाला unit. So ever thought why the prices go up or down? Well, it's all about the market forces. Okay, so we'll talk about supply, demand, elasticity, and the government policies that affect markets. Plus we'll also dive into international trade, so you know why some of your favorite gadgets are so expensive, right? So ये हो गया यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 3 में वी गो स्पेसिफिकली इनटू गवर्नमेंट। ठीक है, so this is going to be super interesting as well. Why do we pay taxes and why do governments sometimes mess up with the economy? Okay, सवाल अच्छे हैं। That is why we will be discussing taxation, externality. Externality में pollution के बारे में तो सुना ही होगा, right? That's a sort of externality. And public goods के बारे में भी बात हम लोग इसमें करने वाले हैं, like roads and parks, जो common property है। Okay, so after this, next time you get stuck in traffic, you'll know why taxes matter. Okay, और हाँ, pollution के लिए किस पे उंगली उठानी चाहिए ये भी सीख जाओगे आप, राइट। सो ये है यूनिट 3 हम लोग का। फिर आते हैं यूनिट 4 में। आई विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग द मार्किंग स्कीम फॉर ईच ऑफ दीज, कि कितना मार्क्स, कितना इंपॉर्टेंस है फॉर ईच ऑफ द यूनिट्स। सो फाइनली यूनिट 4 इज ऑल अबाउट decisions and how we interact with others. We will be introducing you to some cool concepts from a game. Okay, and trust me, once you learn this, you'll start applying it in your daily life. Negotiating with your siblings, okay, friends, and even in the stock market. अगर आप active investor नहीं है, please take advantage. अभी stock market is at a very good level and future भी bright है। So सब जगह ये काम आएगा आपको। ओके, सो ये सारे एस्पेक्ट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। अभी रीडिंग्स के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बात करूं तो ये इसेंशियल एंड रेकमेंडेड रीडिंग है। बेसिकली अगर आप देखें तो एक ही मेजर रीडिंग है, वो है मैनक्यू प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 8th एडिशन। ओके, रेकमेंडेड में ये भी है Acemoglu, Laibson and List, and दीक्षित एंड नस्कीत इज इंपॉर्टेंट फॉर यूनिट 4। ठीक है, बाय फार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप देखें तो ये देखिए वेटेज। यूनिट 1 का वेटेज है 15, यूनिट 4 इज द सेकंड। सो असेंडिंग ऑर्डर में इंपॉर्टेंस 1, 4, 3 एंड देन 2। सो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज मार्केट फोर्सेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउ अ मार्केट वर्क्स। Okay, second important, role of the government. Third important, individual decisions and interactions. And last but not the least, वो भी 15 marks तो आपको देगा, that's unit 1. That is absolutely the introduction to economic trade-offs. ठीक है, so this is the weightage
दैट यू हैव, तो आप वेटेज को अगर देखेंगे, दिस इज इक्वल टू 90 मार्क्स ओनली, तो 10 मार्क्स कहां से आएगा? 10% ऑफ द मार्क्स कैन बी, इज एब्सोल्युटली फ्लेक्सिबल, वो कहीं पर भी आ सकता है। ओके, बट रेकमेंडेड है यूनिट 2 में सबसे ज्यादा वेटेज फिर भी रहेगा, तो यूनिट 2 को बहुत अच्छे से हम लोग करने वाले हैं, राइट? ये तो हो गया आपका सिलेबस। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, ऑल द स्टूडेंट्स हु एनरोल फॉर द कोर्सेज, चाहे वो फ्री कोर्स भी हो, वी हैव गॉट योर बैक 24/7। यस, 24/7। हम लोग का एक व्हाट्सएप पे चैटबॉट है जो आपके क्वेरीज को इंस्टेंटली लॉग करता है। सो रात को 1 बजे भी अगर आपको कुछ भी डाउट है, यू ओपन अप द व्हाट्सएप and you are able to put in your query. If you want to know how to do that, let me give you a demo कि ये कैसे आप कर सकते हो। तो आपको अपना व्हाट्सएप को खोलना है और टाइप करना है 9831327247। क्या टाइप करना है? 9831327247। अभी मैं आपकी स्क्रीन पे भी लिख देता हूं, 9831327247। ये नंबर को नोट डाउन कर लीजिए, ये हम लोग का सपोर्ट नंबर है। ये सपोर्ट नंबर पे व्हाट्सएप आपको करना है, क्या व्हाट्सएप करना है? हेल्प डेस्क। ये देखिए, हेल्प डेस्क। ओके, हेल्प डेस्क। ये व्हाट्सएप करते ही एक लिस्ट आ जाएगा। दिस हैज टू बी डन ऑन योर मोबाइल फोन। यहां पर करने से टोटली आपको अच्छा नहीं आएगा रिजल्ट। तो सिलेक्ट द क्वेरी टाइप, क्वेरी टाइप आपको सिलेक्ट करना है। सपोजिंग कोई कॉन्सेप्ट में इश्यू है, ओके, ये आपके मोबाइल के व्हाट्सएप पर बहुत अच्छे से खुलता है, ब्राउजर व्हाट्सएप पे नहीं खुलेगा अच्छे से। फ्यू ऑफ द मैसेजेस विल बी मिसिंग फ्रॉम देयर। ओके, सो कॉन्सेप्ट इश्यू आपने किया, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस आएंगे। देन यू हैव टू बेसिकली फिल अप दिस फॉर्म, जो व्हाट्सएप वेब पर आपको नहीं आएगा नजर, मोबाइल में ही आएगा। सो ये आपको भरना है वहां पे। आपने वो भर दिया। डू यू हैव एनी इमेज फॉर अपलोड? यस, आप इमेज को भी अपलोड कर सकते हो। एंड voila, your complaint has been registered. You will soon be assigned to the EduSure's support executive and 48 hours में आपका जो query है वो solve हो जाएगा। Okay, so that is the power of 24/7 support for each and every student enrolled with us. And जो microeconomics का course है, as I shared with you, is an absolutely free course. आपको खाली enroll करना है by filling up the Google form जो मैंने आपको दिखाया था। वो fill up करते ही you will get access to the course. ये रहा वो गूगल फॉर्म, जस्ट अ रिमाइंडर, राइट? तो अगर आप सीरियस हैं about excelling in economics, then enroll in our free course right now. जो फॉर्म का लिंक है वो ये यूट्यूब के वीडियो के नीचे में भी है। So fill out the form and we'll send you a user ID and a password to access all the course material on our platform. And remember, अगर आपको YouTube से पढ़ना है, then every week 3 new videos on the YouTube channel. तो देर मत करो, अभी फॉर्म को भरो। Okay, we are excited to see you in class. Until then, stay curious, stay hungry, and let's make economics fun and exciting together. Remember, अगर साथ में है हम लोग, then anything is possible. All the best. See you there in class. Bye bye. Hello everyone. Welcome to our comprehensive journey into the fundamentals of economics. I am Samkith Sir, and today we are embarking on a crucial exploration that will lay the foundation for our understanding of few core economic concepts. These I call the building blocks of economics and are extremely essential for grasping how individuals and a society as a whole make decisions, how they interact with one another, and operate within the broader economy. So, today we are going to talk about economics, which at its core is the study of how a society manages its scarce resources. It involves understanding the choices that we make and the interactions between individuals and groups, and the functioning of economies on a macro and a micro scale. Today, we shall be going into understanding the fundamental, or as I call it, the building blocks of economics. Okay, we shall be talking about a few principles, and these principles
form the structure upon which more complex ideas can be put on. So without any more delay, let's go into understanding the building blocks of economics. So what are we going to do today? We have already introduced economics. Economics, the word comes from the word oikonomic. That's a Greek word which basically means managing a household. Okay, so it's used in a very broad sense, wherein we not only talk about a household, but we also talk about an economy, which is a country, and the world as well. So economics is an extremely broad concept, right? We shall be looking at the study of economics as the study of scarcity and choices, as each of you will understand when I cover the 10 building blocks of economics. Okay, so that's what we are going to do today. So without any more delay, let's go into the building blocks of economics. Let's talk about building block number 1. That is, people face trade-offs. So let's begin with the first foundational concept, where people face trade-offs. Making decisions inherently involves trading off one goal for another. This is a fundamental aspect of economic reasoning. The concept of no free lunch encapsulates this idea as well. Every choice that we make has a cost associated with it, and recognizing these trade-offs is very crucial for sound decision making. Okay, like for example, for a student deciding between spending time studying for examinations or engaging in extracurricular activities. For a government, allocating the resources to healthcare versus defense or education. For families, choosing between saving money for the future or spending on a vacation. So trade-off is inherent in economics. Trade-off between efficiency and equity. Efficiency is maximizing the benefits from scarce resources, and equity is basically fairly distributing economic prosperity among the society's members. There is always a trade-off which we shall be noticing in more complex models of economics between efficiency and equity. Like, for example, you can actually consider progressive taxation. Higher taxes on the wealthy can improve equity by redistributing income, but they might also reduce the incentive for the people to work harder, because the more income I earn, the more tax I will have to pay, and hence impacting efficiency. So this is a very good example for understanding the core economic building block called people face trade-offs. The cost of something is what you give up to get it. Next, we have the concept of opportunity cost as building block number 2. The cost of any action is measured by the value of the next best alternative that is foregone. This principle helps us to understand the true cost of our decisions beyond just monetary terms. Okay, so an example would be college education. The total cost includes not only the tuition fees, books, but also the income that you forego by not working during the study years. Okay, attending a concert, the cost isn't just the ticket price, but also what you could have done with that time, such as working or studying for an exam. Okay, so at this juncture, it will be very nice to pause this video and to actually think about a recent decision that you may have made, to identify the opportunity cost involved with it. Okay, right? Please pause the video and think about a decision that you made, and think about the opportunity cost of that decision. Right. Next building block that I want to talk about is building block number 3. What is the third building block? Third building block is rational people think at the margin. So economists assume that individuals are rational individuals and make decisions by comparing the marginal benefits and the marginal costs of an action. This means that people think about the additional or incremental benefits and costs rather than the total or the average. Okay, right? Now, at this point, it's also important that we understand what is the definition of rationality. Abhi rationality का क्या मतलब है? Rational people systematically and purposefully
do the best they can to achieve their objectives given the available opportunities. Okay. An example for rationality would be airline pricing. Okay. Suppose a flight is about to depart with empty seats. The marginal cost of adding one more passenger is extremely low. So selling the seat at a reduced price can still add to that airline's revenue. Okay. Water versus diamond paradox. Water is essential and cheap because it's abundant, whereas diamonds are expensive because they are rare, and the marginal benefit of an additional diamond is extremely high. Okay, so that's what it is. Rational people think at the margin is third building block in economics. Number four building block is talking about people respond to initiatives, to incentives. Okay, so understanding how incentives influence the behavior is extremely important and a key in economics. So एक incentive is something that induces a person to act. Okay, because लोग decisions make कर ही रहे हैं by comparing costs and benefits. Okay, and they respond to incentives given. So consumer behavior में एक simple सा example, when the price of petrol increases, people tend to buy less petrol and might switch to other fuel efficient cars, जो इंडिया में हो रहा है. Tata is doing so well with electric vehicles, right? People are actually switching to the alternative because the price of petrol is so high today. Okay. Another example would be the policy impact of the government. If the government offers tax credits for electric cars, more people will buy them, reducing pollution. So that's the idea of incentive. एक incentive को देने से definitely कोई policy does well. Okay. So yeah. सही. तो at this juncture it's also important that you think about कि कहाँ पर incentives leads to unintended consequences. जैसे कि सीट बेल्ट के लॉज. इंडिया में सीट बेल्ट पहनना मैंडेटरी है फॉर द ड्राइवर एंड द पैसेंजर्स इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, राइट? दैट हैज एक्चुअली लेड टू एन इंक्रीज इन एक्सीडेंट्स, क्योंकि सीट बेल्ट पहनने के बाद में इंसान अपने आप को हीरो समझता है कि अब मैं कैसे भी ड्राइव कर सकता हूँ, सीट बेल्ट तो मुझे बचा ही लेगा. दैट्स एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इंसेंटिव which is basically to make people more safer, right? You also think about, आप अपने लाइफ में भी ऐसा सोचिए कि कहां पर कोई गवर्नमेंट का इंसेंटिव है बट इट हैज लेड टू सम अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, उससे कुछ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी भी निकल कर आई है by looking at a particular incentive that the government has tried to put across. ठीक है? So that's an exercise जो आप अपने टाइम में सोचिए. You can also pause the video now and actually think about कि unintended consequence का कोई policy example that you can think of. ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं. That's talking about building block number 5. Building block number 5 in economics talks about trade can make everyone better. Okay, so trade से everyone becomes better off. Trade with two people is not a zero sum game, जहां पर एक का बेनिफिट हो रहा है दूसरा का नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं है. Trade makes everyone involved better off. Okay, by specializing in what they do, the individuals and countries can increase overall efficiency and production. ये हम लोग बहुत अच्छे से इंटरनेशनल ट्रेड में रिकार्डो मॉडल, एडम स्मिथ मॉडल में देखे हैं. We have actually seen that in those models that if two countries specialize in what they do best and then do the trade, both of them are better off. Okay, so examples के तौर पर we can talk about countries like Japan and the US trade goods such as cars and electronics benefiting from each other's specialization. Okay, household के लिए let's consider an example where a family where one person specializes in cooking and the other in gardening. Okay, both benefit
with their services. Okay, so it will be a very good idea to right now pause the video and think about anything that you might be particularly good at and how you would be trading your skill or time with others. Okay, and think about how this is going to benefit everyone. You have something that you are particularly good at. You can share that skill with someone else and get the skill of someone else to help you in return, and both of you are better off. Think about such a skill. Okay, that will be good exercise. ओके, तो ये हो गया बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 5. अभी बात करेंगे बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 6 के बारे में. 6 says markets are usually a good way to organize economic activity. So a market में exchange होता है goods and services का, and it leads to efficient outcomes due to the invisible hand. Market को invisible hand भी बोला जाता है, as described by Adam Smith. Adam Smith ने ये बोला था that market is the most efficient way to organize economic activity. Market prices basically reflect both the value to the consumer and the cost of production, guiding the resources to their most valuable use. रिसोर्स को अपना सबसे ज्यादा वैल्यूएबल यूज के तरफ डाइवर्ट करता है द इनविजिबल हैंड, दैट्स मार्केट. एग्जाम्पल के तौर पे यू कैन थिंक अबाउट ग्रोसरी स्टोर प्राइसेस. Prices adjust based on supply and demand, ensuring that goods are allocated efficiently. जो इतना इजीली नहीं बिक रहा है उस पर डिस्काउंट करके उसको बेच देते हैं जल्दी. जो हॉट सेलिंग आइटम है उस पर डिस्काउंट नहीं देंगे. ओके, स्टॉक मार्केट can be an example. Stock market reflects the value of companies based on investor perceptions, guiding investment towards profitable venture. तो जो ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है, जिसका स्टॉक प्राइस भी अच्छा है, स्टेबल है, उस पे लोग इन्वेस्ट करेंगे. ओके, दैट्स अगेन अ मार्केट आउटकम, राइट. अभी फिलहाल स्टॉक मार्केट इज एट अ वेरी गुड लेवल इन इंडिया एंड मोर पीपल आर एक्चुअली गेटिंग इनटू इट. दैट्स अ मार्केट ड्रिवन एक्टिविटी. मार्केट एफिशिएंसी से ग्रोथ हो रहा है. ओके, सो ये पॉइंट पे यू शुड एक्चुअली थिंक अबाउट एक्टिविटीज इन रियल लाइफ जहां पर ये बिल्डिंग ब्लॉक को आप यूज कर सकते हैं. थिंक अबाउट मोर मार्केट्स वेयर देयर इज एफिशिएंसी बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ मार्केट. अच्छा, ये पॉइंट ऑफ टाइम में हमें ये भी समझने की जरूरत है दैट मार्केट्स आर नॉट ऑलवेज द मोस्ट एफिशिएंट वे. इकोनॉमिक्स में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है दैट इकोनॉमिक्स में इफ देयर इज अ रूल देयर विल ऑलवेज बी एन एक्सेप्शन. ये आप धीरे धीरे रियलाइज भी करेंगे. तो इसका भी एक्सेप्शन है. देयर आर वेरियस टाइम्स जहां पर द मार्केट फेल्स एंड द गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन. सो मार्केट फेल हो गया है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन होकर government does what has to be done in order to make the market more efficient. Okay, a very good example in microeconomics is that of a market called monopoly. ठीक है, तो monopoly में monopolist is the single producer of that good. तो वो अपना मनमानी कर सकता है, in fact more often than not करता है. अगर कोई अकेला सेलर है वो ओवरचार्ज अपने गुड के लिए करेगा ही, बिकॉज he is the single producer of that good. Okay, so you need to understand that this is an example jahan par the most efficient outcome is not coming from the market. Okay, the government has to intervene to make the monopolist give an efficient outcome. Okay, especially ye natural monopolist mein काफी use hota hai, government intervention. That's why if you see most of the monopoly in India are owned by the government. गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं मोस्ट ऑफ द मोनोपोली जो एग्जिस्ट करता है इन इंडिया. नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक एक्चुअली इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 6. गवर्नमेंट कैन ऑल्सो समटाइम्स इंप्रूव द मार्केट कंडीशंस. ठीक है, तो
जो मैंने अभी आपको बोला है कि मार्केट फेलियर कैन बी सीन इन अ फ्यू मार्केट्स जहां पर द गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन टू मेक इट एन एफिशिएंट आउटकम. So this is basically an outcrop of that the government can sometimes improve the market outcome. Okay, so while markets are generally efficient, there are cases where government intervention can enhance outcomes, especially in the presence of market failure like externality or monopolies. So externality क्या होता है? एक्सटर्नैलिटी ये होता है, एग्जाम्पल, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, वो रिवर में अपना पोल्यूशन को पुट कर रहा है, एंड वो रिवर का पानी दूसरा फैक्ट्री यूज कर रहा है, बट वो दूसरा फैक्ट्री को वो पोल्यूटेड वाटर को यूज करके उसका एफिशिएंसी डाउन हो रहा है, उसका प्रोडक्ट का क्वालिटी खराब हो रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो इट इज मोर एफिशिएंट दैट द गवर्नमेंट इंटरवीन्स और जो फर्स्ट फैक्ट्री है उसके पोल्यूशन पे एक कैप लगा दे कि इससे ज्यादा पोल्यूशन अगर आपने किया, you will have to clean up the pollution before you put the waste in the water. Okay, so that's an example where externality is there. Externality के presence में the government will be able to make the outcome more efficient, चाहे वो positive externality है या negative externality है. Okay, negative externality would be pollution. Okay, positive externality can be something that an industry is any which way is doing and that is automatically benefiting the other industry. Okay, think about that as an example. सोचिए कि कौन से एग्जाम्पल में ये देखने को मिलता है कि एक फैक्ट्री ने कुछ किया, उससे दूसरे फैक्ट्री को पॉजिटिवली इंपैक्ट हुआ ऑटोमेटिकली विदाउट एनी इंटरवेंशन. ओके, सो गवर्नमेंट के एग्जाम्पल में एक्सटर्नैलिटी में पोल्यूशन कंट्रोल इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल वेयर गवर्नमेंट रेगुलेशंस कैन reduce the negative externality, as such basically emissions from factories. A good example would be monopoly में या oligopoly में, जहां पर there are a few firms, वहां पर collusion को बैन कर दिया जाए, that these firms cannot collude, they will have to compete in a competition kind of a scenario. Okay, so government interventions में आप ये सोचिए as an activity for yourself कि कहां पर गवर्नमेंट ने मार्केट फेलियर को डील करके उसको ज्यादा एफिशिएंट बनाया. ओके, लाइक देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ bankrupt organizations getting bailouts. A very common example is Yes Bank. Okay, जहां पर the government का largest bank, that is SBI, came forward and helped keeping it afloat. Healthcare के reforms में insurance companies are not allowed to overcharge as a premium because all the insurance companies know that individuals are risk averse. तो risk averseness का फायदा वो नहीं उठा पाए. So that's important, and hence there is government intervention in insurance sector. Okay, you should also think about these कि ये सारे interventions क्या successful ही रहे हैं हमेशा. Okay, हमेशा ये सक्सेसफुल नहीं रहे हैं. Some of these have been very successful and they have improved the efficiency in markets, whereas the others have also unintended repercussions. ठीक है, तो ये था बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 7, जहां पर वी टॉक्ड अबाउट द रोल ऑफ गवर्नमेंट. मार्केट फेलियर, एक्सटर्नैलिटी एंड मोनोपोली के केस में द गवर्नमेंट कैन इंटरवीन एंड मेक द सिचुएशन मोर एफिशिएंट. अब चलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 8, प्रिंसिपल नंबर 8. 8th प्रिंसिपल है, अ कंट्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. So a nation's standard of living is determined by the productivity of its workforce. Higher productivity leads to higher standards of living for all the occupants of a country. Okay, so example would be technological advancements. Countries that invest in technology and education tend to have higher productivity and consequently higher living standards. Okay, nations with highly skilled workers can produce more valuable goods and services. Okay, so यहां पर आप खुद से इसके बारे में सोचिए that
what is the impact of education and training programs on a country's economy? India is growing approximately 7% every year only because our education sector is getting better and better and better. There is access to better education than it was earlier, although it is nowhere close to where we want to be, but it's a step in the right direction. Okay, so the education and the training programs is how a country's economy goes up. So you should at this point also think about and write down your views that how can we improve education in India and how will this lead to economic growth. ठीक है, ये एक एक्टिविटी, ये एक होमवर्क आप अपने दिमाग में सोचिए. अभी ये वीडियो को पॉज करिए एंड यू थिंक अबाउट दिस. यू थिंक अबाउट हाउ you can improve education in a country like India and how will it lead to economic growth. ठीक है. Next building block, number 9. Price rise when the government prints too much money. So inflation occurs when there is an increase in the overall level of prices in the economy. It is usually caused by excessive growth in the quantity of money that is existing in the economy. तो बहुत ज्यादा मनी को प्रिंट कर दिया है, बहुत ज्यादा मनी इनफ्लो हो गया इन द इकोनॉमी. दैट इज हाउ द ओवरऑल प्राइस का लेवल, दैट इज द वैल्यू ऑफ द करेंसी फॉल्स, एंड दैट इज इन्फ्लेशन. सो हिस्ट्री में, अगर मैं हिस्ट्री में जाऊं तो जर्मनी इन द 1920s printed a lot of money, and Zimbabwe in the 2000s they printed a lot of money and they experienced hyperinflation, crazy amount of inflation due to this excessive money printing. Okay, and this is exactly why central banks today manage the money supply in order to control inflation and ensure economic stability. Okay, so it's important for us to understand, and we shall also be studying this in subsequent lectures in macroeconomics. What are the central banks doing in order to control inflation? What is the monetary policy of the central bank in order to control inflation? And there are various tools that I shall be talking about that are available to central banks in order to ensure that a very high inflation does not happen. Okay, they have a very important tool called interest rates. They have a very important tool called cash reserve ratio or the reserve requirements. So these are important examples which help a central bank control inflation. तो ये था बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 9. अभी बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 10 पे जाते हैं. Building block number 10 is again focusing on the macroeconomic aspect of an economy. The society faces a short-run trade-off between inflation and unemployment. There is often a short-term trade-off between inflation and unemployment. Policies that reduce inflation can temporarily increase unemployment and vice versa. This can be beautifully seen by the Phillips curve, which gives us the short-run trade-off between inflation and unemployment. Phillips curve के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे मैक्रोइकोनॉमिक्स में. Okay, and just to give you some sort of a insight कि ये कैसे होता है. During a recession, the governments can increase the spending to reduce unemployment, and that can lead to higher inflation. ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है. अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी अच्छा खासा खर्चा किया अपने पॉलिसीज में. मिनिमम वेज गारंटी पॉलिसीज, वेजेस गारंटीड फॉर अनएम्प्लॉयड पीपल, ये सब जो है पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, दैट बेसिकली इंक्रीजेस द गवर्नमेंट का स्पेंडिंग, दैट इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. वो अनएम्प्लॉयमेंट तो रिड्यूस कर रहा है बट वो इन्फ्लेशन को बढ़ा दे रहा है. ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि गवर्नमेंट ने खर्चा किया अनएम्प्लॉयमेंट को घटाने के लिए और इन्फ्लेशन एज अ रिजल्ट बूस्ट अप कर दिया. ओके, तो अभी इट विल बी वेरी नाइस टू पॉज द वीडियो and to think about the economic policies
of the Indian government at reducing unemployment? And did they increase inflation? Think about it logically. And also think about the policies where the government was wanting to control inflation. Inflation ko control karna hai. Did that lead to higher unemployment? Okay. So analyze the short term and the long term impacts on this. Right. So that brings us to the end of the important economic policies, the important economic foundations, or the building blocks or the principles of economics. So to wrap up, we have explored the 10 foundational principles that serve as the building blocks of economics. These principles have helped us understand how individuals and societies make decisions, and how they interact, and how the economy functions as a whole. By mastering these concepts, we gain a very clear perspective on the complexities of economic systems. Okay? So thank you so much for joining me on this extraordinary journey of understanding economics at the foundational level. So we have basically understood 10 foundational principles of economics. And I hope that each of you have found this session to be enlightening and engaging. Okay, stay tuned for the next video that will be out very soon for the next part of this session, and we'll delve a little more deeper into specific economic concepts. For more resources and updates, please stay tuned and take a look at the student portal and subscribe to our YouTube. See you next time. Till then, all the best and happy studying.